We can take one more variation over the same problem that we have discussed earlier. But the variation is here the length of a string is divisible by 2 or 3, not and. Okay, so just see here the variation. अब आपको यहाँ बोला जा रहा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 2 या 3 से डिवाइड होना चाहिए. वहाँ पर था 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए. यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि 2 या फिर 3, यानी कि 2 से हो तो भी ठीक, 3 से हो तो भी ठीक है, और अगर दोनों से होता है तो बहुत ही अच्छी बात है. सो मतलब अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो दूसरे को चेक नहीं करना है, कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो दूसरा चेक कर लीजिए, दूसरी ट्रू हो जाती है तो भी एक्सेप्टेबल है. ओके, और अगर दोनों ट्रू हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेप इज इनपुट अल्फाबेट्स. We have the input alphabets as 0 and 1. Then next is the language. Okay, so the language we can identify it here as, we know that number of states, the value of n. Okay, so we can say the language is of length of strings which is divisible by 2 or 3 both. Okay, by divisible by 2 or by 3. So what are the numbers which is divisible by, अगर हम n की बात करें तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि 2 या 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं. सो 0 जो कि दोनों से डिविजिबल है, फिर आएगा 2 जो कि 2 से डिविजिबल है, 3 से भले ही ना हो. 3 it is divisible by 3. Okay, 4 it is divisible by 2. Then 5 no, क्योंकि 5 ना 2 से डिवाइड होता है ना 3 से डिवाइड होता है. 6 yes, divisible by both. Then 7 no, 7 दोनों से नहीं होता है. 8 yes, we can include 8. So 8 is divisible by 2. 9 yes it is, and so on. So you can see here the length of a string must be of this type. That means 0 length string, 2 length string, 3 length string, 4, 5, 6, 7 इस तरह से. तो 0 लेंथ स्ट्रिंग तो हो जाएगी एप्सिलॉन, 2 लेंथ स्ट्रिंग हो जाएगी आपकी 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके, 3 लेंथ स्ट्रिंग्स हो जाएंगी, वो आपकी हो जाएंगी 000 से लेकर 111 तक. एंड देन 4 लेंथ स्ट्रिंग 4 टाइम्स 0 से लेकर 4 टाइम्स 1 तक, and so on. So we have these kind of strings in the language. Okay, अब number of states कितनी होंगी, we know that very well. Number of states is equals to LCM of 2 and 3. ये एंड मतलब आप इसको कंपेयर मत कीजिएगा, एंड मतलब ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी द LCM of 2 and 3. V equals to the LCM of 2 and 3 both. Okay, so we get 6. So number of states सेम ही रहेंगी, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो प्रॉब्लम में नंबर ऑफ स्टेट्स सेम है. ओके, बट हियर चेंज कहाँ आएगा वो हम देखते हैं. सो वी हैव 6 स्टेट्स हियर. अगेन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. So these are the states. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5. ये हमारी स्टेट्स हैं. अब इनमें से ये तो हमारी इनिशियल स्टेट हो गई. ओके, और जो ट्रांजिशंस हम बनाएंगे वो ट्रांजिशंस जो है हम कंप्लीट करेंगे. अच्छा, एक चीज़ जो हमें यहाँ देखना है दैट इज़ कि इन स्टेट्स पर जो है कौन कौन सी स्टेट्स फाइनल होंगी. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं ये सब फाइनल स्टेट्स होंगे. क्यों? लेंथ 0 एक्सेप्टेबल, लेंथ 1 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, लेंथ 2 इज़ एक्सेप्टेबल, लेंथ 3 इज़ एक्सेप्टेबल, लेंथ 4 इज़ एक्सेप्टेबल बट नॉट 5, then again 6. Okay, so you can say this will be the final state, this will be the final state, divisible by 2 और it may be divisible by 3, क्योंकि एंड कंडीशन नहीं दी है तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है. Divisible by 2, that means 4 is divisible by 2, 5 is not, then again
6 is divisible by 2, 7 is not, 8, 9, 10, ठीक है, 11 is not, 12, 13, 14, 15, 16, 17 is not, then again 18. So you just need to complete the transitions here. So for the input alphabets, so we have the input alphabet 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, comma 1. So this is the transition diagram. Now the formal definition. So as per the formal definition, you can see DFA having these Q, Q naught, input alphabets, final states, and the transition function. Then set of states we have Q naught, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Okay, this is what we call set of states. Now initial state, we have the initial state where Q naught belongs to Q. Then input alphabets, so 0 and 1 will be the input alphabets. So now you can see the set of final states we have as 4 final states in this DFA. It starts from Q naught, then Q2, Q3, and Q4. Set of final states. Then the transition function. Okay, now transition function, say you just need to complete it. Transition at Q naught with 0, it will be Q1. Then transition at Q naught with 1, it will be Q1 again. Okay, so then Q1 with 0, Q2, Q1 with 1, also Q2, Q2 with 0, Q3, Q2 with 1, again Q3, now Q3 with 0 will be Q4, Q3 with 1 again will be Q4, Q4 with 0, Q5, Q4 with 1, again it is Q5, and then at last. So as of now, the first one is Q5 with 0 will be Q naught, and Q5 with 1 again it is Q. So this is what we call on the DFA, the diagram and its corresponding tuples. Okay. Thank you.